Are we live, ma'am? Okay. So, hello guys. Welcome to you all to the another session of try and exception. So now we are going to see how to get the errors and how to tackle those errors. Okay. So, with the help of some special functions, okay, with the help of some special features of Python, we will be able to debug and we will be able to manage how you can manage your errors, right? So let's move towards it directly without wasting much time. So here we go. Okay. So okay, here we go. Try an exceptional handling. Okay. So what is this? What is this? And why we need to handle those exceptions and what are these errors? Okay. We will understand this one by one. Okay. Now, what does that try statement means? What is that except? What is that finally? What is that else doing over here? Right? We will understand all these points once. Okay. Just look at this screen first. Okay. So if I am writing val underscore at the rate equal to 10. So what is this operation? Okay, here we are assigning a value 10 to the value underscore at the rate. Okay, but you can see this will give you error. Okay, why this error is? Okay, why we got this error? The reason is your variable doesn't understand this at the rate. Okay, your variable name cannot have any special character apart from this underscore. Now, if I will write this, then it will run properly, right? Now I will get my value, right? Perfect. Okay. So, sir, how that Python knows that this is an error? Because Python has certain set of rules. Okay, Python has certain set of rules by which he identifies, right? He identifies that at the rate is there with the variable name. Okay, that is not allowed. So based on those rules, he Python gives the errors, right? What error we got? Syntax error. What do you mean by syntax error? When you have written the code in an improper manner, right? Improper manner, the thing which is not acceptable. Okay, then we get syntax error. Okay, now, so this is your errors. So Python interpreter is there. Okay, what are your interpreters? Interpreter is nothing but your brain. Okay, interpreter is nothing but a brain. Okay, of Python. So that helps Python to understand when it is an error, when it is not an error, right? So Python understands with the help of your interpreter. Now, what error? Syntax error. Why we got this syntax error? Because this is a string. Okay, this is a string, and we are adding an integer. We are placing an integer. Okay, so it should also be in the form of string. Now that error is removed, right? Okay, okay. Sir, how many types of error are there? There are plenty of errors. Plenty of errors. We have a list of errors like your type error, name error. We will see one by one. Okay, now here what we are doing, well, 10 plus, so 10 plus 10 is possible, right? Okay, but it will give you error. What type of error it is? Type error. Okay, type error. Why we are getting this type error? Because you can see clearly this is an integer and this is an string. So can we add string with integer? No.
No. Can we add string with integer? No, it's not allowed, right? Because we cannot add two different data types. We cannot add two different data types. That's why it will give you type error. Okay, that's why it will give you type error. Okay. Now what we can move ahead with. Okay, so now we know what is your type error, right? Okay, let's see this way. So now tell me, right, is it possible to divide 10 by 100? Yes, sir. What we will get? Sir, 0.1. Very good. But is it possible to divide 10 by 0? Is it possible? It will give you zero division error. It will give you zero division error. This is also one kind of error because none of the number is divisible by 0. You cannot divide any value with 0. That is indefinite. That is indefinite, right? So that's why we got zero division error. So there are n numbers of error possible, right? Okay. So see one more. Now tell me, what will be the answer for this? What will be the answer for this? So we have two options. A is 1 and B is 0. Okay, so it is neither 1 nor 0. It is neither 1 nor 0 because as we have seen, no number can be divisible by 0. You will see the same error, zero division error, because you cannot divide any number with 0. You cannot divide 0 with 0, 1 with 0, any number with 0. Okay, so that will give you zero division error. Okay, so till now we have seen syntax error, okay, type error. We cannot add two different types. Syntax error, type error, and zero division error. Okay, now we will see print x. Sir, why x? Why we are getting error? It should write print. Okay, because we are not mentioning it in the inverted commas, right? If we mention this in the form of inverted commas, then it will print. But if we will print directly x, then it will give you, because it is expecting some value. It is expecting some value. Now it will print, right? Now if you will print y, is there any y? No. So that will give you name error. Means any name or any variable which is not defined. ठीक है, आपने कोई वेरिएबल सेट नहीं किया है अभी तक, और फिर आपको अगर वो वेरिएबल को अगर आप फिर उसको कॉल करते हो, राइट, if you are calling that variable or printing that variable, okay, that will in return will provide you not defined. Okay, perfect. Okay, so we have seen few of the errors. Now let's move to the some other part. Okay, why we need to understand this error. Okay, what is the use of this error? Okay, so basically this error are the errors are the mistakes predetermined by the Python interpreter. Okay, जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है, राइट, आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसने पहले से पता कर लिया है, राइट, उसने पहले से पता कर लिया ये एरर होते हैं, राइट, पहले से ही नोज कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है. ओके, दोज आर नोन एज योर एरर्स. ओके, सो as a Python developer, or if we are working with this Python language, we should understand this error, okay, so that we should not make this mistakes. Okay, okay sir, got it. So now we got syntax error because perfect. Now
Is there any way to surpass this errors? Okay. Is there any way to surpass this error? What do you mean by surpass? क्या सर इसका कोई जुगाड़ हो सकता है जिससे भाई कोई एरर्स ना मिले? कुछ कुछ अल्टरनेटिव इसका? Yes, yes. We have exception handling. Exceptional handling. Exception handling. सर ये क्या होती है? ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करेगा? इफ एट ऑल अगर आपके कोई पार्ट में एरर है, राइट, इफ एट ऑल आपके कोई पार्ट में एरर है, कोई कोड में एरर है, सो इन दैट केस व्हाट इट विल डिटरमाइन, इट विल प्रोवाइड यू एन काइंड ऑफ एन अलार्म. आपको एक अलार्म देगा कि देयर इज एन एरर, देयर इज एन एरर, लेकिन आपको एरर दिखाएगा नहीं, सिर्फ आपको प्रिंट करके दे देगा. उसमें क्या फायदा है सर? क्यों हम एक्सेप्शन लगाए, क्यों हम एक्सेप्शन हैंडल करें? सो दैट आपका जो आगे का कोड है वो प्रॉपरली रन हो, राइट? आपका जो आगे का कोड है वो प्रॉपरली रन हो. ठीक है, अब यहाँ पे यू विल सी दिस पार्ट. ओके, इट विल हेल्प यू टू surpass your error. Okay, got it. सर अभी आप एक चीज देखो. ओके, नेम का एक लिस्ट है, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, फॉर आई इन रेंज 1,15, okay, print I a is equals to okay. Now tell me, is this loop related to this? अगर ये लूप रन होगा तो इससे ये लूप को कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई वैल्यू रिलेटेड है? ये क्या ये दोनों रिलेटेड है? सर नो, नो, राइट? सर ये क्या ये नेम रिलेटेड है? क्या ये नेम रिलेटेड है इन किसी ये दोनों ब्लॉक ऑफ कोड से? ये ब्लॉक ऑफ कोड 1, ब्लॉक ऑफ कोड 1, ब्लॉक ऑफ कोड 2, राइट? क्या ये अब ये नेम आपका इससे रिलेटेड है ये लूप से? नहीं सर. क्या 2 से रिलेटेड है? नहीं सर. क्या ये ब्लॉक ऑफ कोड 2 कोड 1 से रिलेटेड है? नो सर, राइट? नाउ यू विल सी एरर आया, एरर आया. सर ये वाला कोड तो रन हो जाता, इसको तो किसी से प्रॉब्लम नहीं थी. सर ये वाला कोड तो रन हो जाता, इसको भी किसी से प्रॉब्लम नहीं थी. ये यहीं क्यों रुक गया? बिकॉज आपका जो पाइथन है इट टेक्स दी कोड लाइन बाय लाइन. ओके, आपका लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है, राइट? अगर आपका पहले लाइन में प्रॉब्लम है तो पहले वो पहले लाइन का प्रॉब्लम रिजॉल्व होना चाहिए, राइट? सो अब सर ये लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, आपने बीच में ये एलिमेंट पास कर दिया, ये गलत है, राइट? ठीक है, अब देखो, अब लाइन नंबर 6 में एरर मिला, लाइन नंबर 6 में एरर मिला, राइट? सर ये आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, ये तीनों ऑपरेशन कर दिया आपने एक साथ. ये नहीं पॉसिबल, राइट? आप कोई भी एक ऑपरेशन करो, राइट? अब देखो पूरे रन हो गए. एक सेपरेटर डाल देते हैं बीच में सो दैट इजीली आपको इंडिकेट हो जाए कहां से क्या रन हो. ठीक है, ये आपका फॉर लूप चला, ठीक है, ये अगला लूप भी चल गया, राइट? ओके. सर इसमें एक प्रॉब्लम है,
जब तक आपके ऊपर के पूरे एरर्स क्लियर नहीं होंगे, राइट, जब तक आपके ऊपर के पूरे एरर्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आगे का पार्ट रन नहीं होगा, तब तक आगे का पार्ट रन नहीं होगा। इसीलिए हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखी, इसीलिए हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग देखी। अब एक्सेप्शनल हैंडलिंग के अंदर है 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर ट्राई, ठीक है, सेकेंड इज योर एक्सेप्ट, ओके, थर्ड इज योर एल्स, फोर्थ इज योर फाइनल, ठीक है। अच्छा, ओके, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स एंड फाइनली, ओके, वी विल सी वन बाय वन, ओके। अभी वी नो नंबर 10 इज नॉट डिविजिबल, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल कीप ट्राई, ओके, ट्राई के अंदर लिखेंगे अब हम, ठीक है, ट्राई के अंदर लिखेंगे, राइट। यहां क्या देंगे, ओके, व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, व्हाट वी आर गेटिंग, सर यहाँ पे ये अगर इफ, ये आपके इफ एल्स जैसे काम करेगा, राइट, इफ एल्स जैसे काम करेगा। ट्राई, ये पॉसिबल है, ओके, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये आंसर आता है आपका, राइट, यहाँ मैं प्रिंट नंबर दे दूं, ठीक है, यहाँ पे नंबर आना चाहिए, 10 डिवाइड बाय 0 जो भी होता है वो आना चाहिए। क्या आ रहा है, देयर इज एन एरर, क्या आ रहा है, देयर इज एन एरर, ओके। मतलब हम इससे हमको क्या समझ में आएगा, जो भी आपने ट्राई के अंदर लिखा है दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू पाइथन। ये जो आपने लिखा है ये लाइन में, ये इट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू पाइथन। कैसे पता चला आपको, आपने ट्राई के अंदर इसको लिखा, ओके, एंड आपका अगर ट्राई सही है तो आपका ये वाला पार्ट रन होगा। अगर आपका यहाँ पे कुछ गलत लिखा हुआ है, राइट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट रन हो जाएगा, एक्सेप्ट वाला पार्ट, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या आ गया सर, 110 आ गया। अब क्या आ गया, 110। क्यों सर, अब ये एरर वाले लाइन क्यों नहीं आया, बिकॉज सर मेरा ये कोड राइट था, बिकॉज दिस कोड वाज राइट, सो दैट्स व्हाई आई गॉट द आंसर। now let's see this, okay, let's see this. If at all we will do it this way, 10 plus Yash, is it possible? No sir, it's an error, definitely. Two different data types we cannot add, what we will get, okay sir, got it. Now let's see how your else is going to work with this in this case, okay. So else print no error found, okay. So now here 10 cannot be added with Yash, right? We cannot add integer with string, okay. We cannot add integers with string, okay. Now only this except will run in this case, only this except will run in this case, okay. We won't run this else part, we won't run this else part, okay, okay. If your try statement is right, if your try statement is right, okay, if your try statement is right, then this will also run and else will also run, okay. Then your try will also run and else will also run. Now your except won't run, okay. So जो try और else है आपके,
ट्राई और एल्स आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, राइट? तो ट्राई रन होता है तो एल्स डेफिनेटली रन होता है, बट एक्सेप्ट रन होगा तो सिर्फ एक्सेप्ट रन होगा, और ट्राई और एल्स में से कोई नहीं, ठीक है? सो ये सर एल्स क्यों डाला आपने फोर्सफुली, व्हाई यू एडेड एल्स? ओके, द रीजन फॉर एडिंग दिस एल्स स्टेटमेंट इज you should understand, na? You should understand, is your code running properly or not? Is that try statement ran properly or not? Okay, with the help of this, with the help of else, you will identify. You will get 30 and here no error found. Okay, perfect. Now let's see how we can add finally, how we can add finally over here. Okay, now you can see, now you can see what we are getting. We are getting this print number, we got 30. We are getting this print no error found, we got it. Okay, we didn't we are not going to get this except part, because if try is running properly, if try is running properly, this except won't run. Okay, any one of them will run. Okay, and if try is running properly, else will also run. Sir, ये तो पता है, अगर try run करेगा तो else will also run properly. Okay, perfect. So we got no error found. Then finally, so why we have finally? Okay, so whatever happens, print me in any case. What he says, print me in any case. Either you have exception or your try statement is working fine. You have to run me. Print me in any case. I will execute in any case. Okay, I will be get executed in any of the cases. Okay, okay. Sir, let's see. Let's see. Okay. Now we will, what we will do this. We will again try to do. Now what you are getting? Sir, this is not possible. So if try is not possible, else is also out. If try is out, else is also out. Okay. Now you can see there is an error. Yes, we got it. Now what we are getting along with finally. Finally, if we are getting error, then also this finally will run. Okay. And if we are not getting any error, then also this finally will run. Finally is like kuch bhi ho boss, I will run perfectly. Okay. Okay. Then you can see the next step. Okay. So look at over here again. Come back here. Come back. So here we have a problem. Okay. Here we have issues. Right. Here we have issues. Here we have pipe. Here we have this, something like this. And it was giving us error. Right. It was giving us error. Now, what you can do with this? If you know there is no error in this finally, what you will do? You will keep this in finally. Okay. Now this block of code is into finally. Okay. Now we don't know if this statement is right or wrong. So this is under try. Okay. And this entire block is under try. Okay. What we will write? Except print error found. If this is right, if this statement is right, then this won't run. Else print no error. So what we got? Okay.
Okay, can you see this? Sir, this is not possible. This is not possible. We cannot add a list with tuple. We cannot add list with tuple. Okay, so we got error. Now you can see what we got. Error found should run. So let's see. Now we have error found. We have founded that error. There is an error. So if that try is not working properly, this else will also not run. Okay, but finally will run. Finally will run. Okay, so now your second block will run properly. You can see print statement has run and J is running, right? Your second block is running properly. So now we know there is some problem with this block, right? So now we can figure this out. Now we can figure this out. Okay, we did this. Now again, what we got? Error found. One and error found. Why we got this one? Because you can see print I. For I in range, print I. This is fine, right? So for 1 it has ran, right? But I, 1 multiplied by 10, that is 10. 10 plus Yash. Is it possible? Sir, we cannot add integer with string. We cannot add integer with string. Okay, but we can multiply. Now you can see we got the answer. And what we are getting? No error. So our try ran, right? Then except will not run. Okay, then your else will run. Okay, and finally will run in any case. Now you can see try, no error, and finally your other output, right? So this is how your try and exception helps, right? Sir, why we use? Actually एक आप एक कोड में बताओ, okay? जो आपने भी बताया. सर इसका एक लाइव प्रैक्टिकल एक इम्प्लीमेंटेशन कैसे काम आ सकता है? Assume आपका एक 1000 लाइंस का पाइथन का कोड है, ठीक है? Listen to this properly, okay? Assume आपके 1000 लाइंस का पाइथन का कोड है. Now अब वो पाइथन के कोड में you want to move ahead with कि ओके आपको पता है डिफरेंट लोकेशन पे प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा पाइथन का एक प्रॉब्लम क्या है? लाइन बाय लाइन रीड करता है, राइट? तो जब तक आपके पहले लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, दूसरे लाइन पे जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा. दूसरे लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक तीसरे लाइन पे जाएगा क्या? सर नहीं जाएगा, राइट? तो जो आगे के इजी प्रॉब्लम्स थे, राइट, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी वो तो रिमूव हो सकती थी. मीनवाइल आप पहला प्रॉब्लम सॉल्व करो, राइट? बट ये पॉसिबल होगा क्या पाइथन में? नहीं. तो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी ब्रेक दैट कोड. तो अब हम क्या किया? हमने ट्राई लगाते गए जहां पे भी हमको लगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, तो व्हाट वी डिड, हमने ट्राई लगा दिया, राइट? ट्राई लगाया एंड वी गॉट द एरर. अच्छा इतने पार्ट में एरर है, इतना ठीक है, राइट? सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई. ओके, और आपका जो पाइथन का कोड है दैट विल रन बेटर, राइट? दैट विल रन बेटर. नाउ अब इसका और एक यूज केस, ठीक है? सर इसको लिखते कैसे आप एक बार बताओ. ट्राई, यहाँ पे आपका जो भी कोड है, ओके, यहाँ पे आपका जो भी कोड है, ओके, दैट इज फाइन. नाउ ओके, ट्राई में आपका जो भी कोड है इट विल चेक इज इट राइट और रॉन्ग. ओके, एक्सेप्ट विल बी ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन, जब आपका ट्राई में समथिंग इज रॉन्ग. ओके, समथिंग इज रॉन्ग विथ योर ट्राई कोड, तो इन दैट केस आपका एक्सेप्ट रन करेगा. एक्सेप्ट को लिखने का तरीका एक्सेप्ट कोलन. ओके, सो इट इज वेरी मच सिमिलर टू योर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट. सर फिर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट क्यों नहीं यूज करते हैं? ओके, इफ एंड एल्स आपका कंडीशन हैंडल करता है, राइट? आपके एरर हैंडल इफ एंड एल्स नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई वी हैव ट्राई एंड एक्सेप्ट.
Okay. Now what we did, sir, except name error. Okay, except value error. Okay. Okay, except error, no number is divided by 0. Okay, तो अब क्या हो रहा है, आपने एरर के नाम स्पेसिफाई कर दिए. अगर नेम एरर है तो नेम एरर दे दे, राइट. ओके, एक्सेप्ट नेम एरर, तो यहाँ पे जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगा. अगर वैल्यू में एरर है तो क्या रन हो जाए, वैल्यू. और अगर आपके जीरो डिवीजन में एरर है, सो व्हाट यू विल राइट, प्रिंट error, no number is divided by 0. No number is divided by 0. So now what we are getting, sir, it is a zero division. So let's take the other one. Now what we are doing, 10 plus Raj. What should not take this. Now what we are getting, type error, because integer type cannot be added with string type. That's why we are getting type error, right? So we are, if we are mentioning along with except, if we are mentioning the error name as well. Okay, if we are mentioning along with except error name as well, what we are getting, we will get this print statement. Okay. Okay. So this is how we will be able to identify which kind of error it is. Okay. Now just take a quick view over this theory part and then we will move ahead with this. So what it suggests, Python has a built-in exceptions. Built-in exceptions है, पहले से बने हुए Python को इंटरप्रेटर को पहले से पता है. Arithmetic error, okay, zero division error, EOF error, index error, key error, syntax error, indentation error, file not found order, बहुत सारे टाइप के errors है, right? Okay. When the exception occurs, Python interpreter stops the current process and pass it to the calling process until it is handled. ठीक, तो जब भी कोई एक्सेप्शन होता है, राइट, जब भी आपका कोई रूल ब्रेक होता है पाइथन का, राइट, एक्सेप्शन होता है, तो क्या होता है, इंटरप्रेटर रुक जाता है. ओके, एंड इट प्रोवाइड्स द एरर. नाउ इन ऑर्डर टू हैंडल दिस, हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर टू हैंडल दिस वी हैव अ ट्राई स्टेटमेंट. ठीक है, सो देयर ट्राई ब्लॉक लेट्स द टेस्ट ऑफ ब्लॉक. ओके, टेस्ट करता है ब्लॉक में एरर है क्या नहीं, राइट. then we have block code which can raise exception. Okay, which can raise exception, plays inside the try blocks. Okay, so we have except clause. Okay, except clause के अंदर whatever we write we get it as except. Then we have finally. Okay, what finally does, rest of the code, rest of the block of code, it should run either your try is right, either your except is right. That should run properly, so that we will keep in under finally. So we can also use your else keyword to execute no exception raised, right? If at all agar koi error nahi aaya, okay, in order to identify as a developer, we can provide else statement. Okay, Python also allows to create own exceptions. Okay, Python allows you to create own exceptions using the raise keyword, okay, and the except. Okay, that we are going to see. Achha. Sir, अब try में क्या हो रहा है? Let's see. Try में we have written 100 divided by 0. Is it possible? No, sir. Okay. So then what we will get? Then this block of statement will run. Print sys execute error exception occurred. Okay. We will see what will happen. Okay. In this case, if try was right, then no exception occurred. That we will get. And this run finally run this code block always, right? So with finally everything will run continuously and permanently. Now, sir, what do you mean by this? Sys dot execute info, okay, square bracket 1. What does it indicate? Okay. So let's see it again. See this part again. Okay. Input this. Now we will write
sys dot, okay, okay. Now what we are getting, class type error, okay, right, class type error. Let me write it this way. Okay. So what we are getting? We are getting this tuple. We are getting a tuple, okay, where we have first element as class type error. Then we have type error. Cannot only okay, can only concat list, not integer, to list, okay. Then we have the location of this object. तो अब हमको क्या मिलेगा? sys, अगर हम ये कोड रन करेंगे तो ये कोड देता क्या है बेसिकली? sys.exe_info, execute info, ओके, एग्जीक्यूशन एक्सेप्शन इन्फो. ये देगा क्या आपको? ये आपको देगा कि क्या एरर है, ओके, क्या एरर है, किस वजह से एरर है, और लोकेशन ऑफ दैट एरर, राइट, तीनों चीज दिया, ओके. इफ यू विल राइट सेम कोड एज स्क्वायर ब्रैकेट 0, ओके, आपने स्क्वायर ब्रैकेट 0 मिला, आपको क्या मिलेगा? क्लास टाइप किसका है? टाइप एरर का, राइट, क्लास क्या है? टाइप एरर. तो यहाँ पे कौन सा एरर हुआ? टाइप एरर का. एक लिस्ट टाइप है, एक डेटा टाइप है, ओके. अगर आपको डिटेल चाहिए कि ये एरर क्यों हुआ, क्या है ये एरर, तो नाउ यू विल सी कैन ओनली कॉन्केट लिस्ट, नॉट इंटीजर टू लिस्ट. क्या बोल रहा है? सिर्फ लिस्ट को लिस्ट से ऐड कर सकता है, इंटीजर से लिस्ट को ऐड नहीं कर सकता, राइट. दैट यू विल गेट, ओके. इफ यू विल राइट 2, देन व्हाट यू विल गेट? ट्रेस बैक ऑब्जेक्ट क्या है आपका? दिस इज योर ट्रेस बैक ऑब्जेक्ट, ओके. दिस इज नथिंग बट योर ट्रेस बैक ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपका जो एग्जीक्यूशन एरर है वो स्टोर हुआ है, राइट. ओके, ओके. नाउ so now you will hear what you will write, 1, right, q. So you will get idea what exactly that error is, okay, what exactly that error is. Okay, so got it. Now moving to next points, okay, we will see. Okay, so what happened over here? os dot remove text, okay, and if this file is not found, okay, sir ये file नहीं मिली, okay, तो क्या होगा? error होगा, right. So in that case what will run? below exception occurred. exception क्या है? below exception occurred, right. तो ये else वाला statement run नहीं होगा, okay. below exception occurred, win error, the system cannot find the text file, ठीक है, system को ये file नहीं मिली. now run this block will always run because finally में है, right. now you see this. क्या हुआ? सर ये x इनपुट था, एक नंबर लिया, y इनपुट था, एक नंबर लिया, प्रिंट डिवीजन ऑफ दिस टू नंबर्स. क्या हुआ? 12 डिवाइड बाय 13, सर 0.92, राइट सर, आ गया. बट यहाँ पे एरर आ रहा है, राइट. os डॉट रिमूव टेक्स्ट. क्या अब वी वांट टू आइडेंटिफाई कि किस टाइप का एरर है. क्या वेरिएबल के नाम गलत थे? नेम एरर? नहीं. फाइल नहीं मिली? यस सर, फाइल नहीं मिली. तो यू कैन सी फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्शन अकाउंट, फाइल नॉट फाउंड, एक्सेप्शन अकाउंट, राइट. जीरो डिवीजन एरर था क्या? नहीं, राइट. So this is how it will help you to identify, right. So we have we can print n number of examples now, okay. We can print n number of examples for this, right. So here you can see try print x1, okay. So have we defined x1? No, right. We
error. Okay, this n where we got, okay, this name is not defined, right? So we will get name error. So in that case, what we will get, print name error exception occurred, right? Okay. Finally, we are asking the end user to input a value. Okay, he is able to manage and input the value. So in that case, we will not get any error, right? If he will write 0 divided by 0, then only we will get this error. Okay. So this was all about your try and exception. Okay. So that's all for today, guys. Thanks for being with us. Hope you have enjoyed this video and you have got all the crux and ideas how to handle your errors, how to handle your exceptions, and how to work with try and exception, right? So thanks for being with us. And here we have few questions for you. Okay. So I am waiting for your questions, waiting for your answers in the chat box. So here we go. Now there are two options. A and B. So tell me which will try work, will try run, or will accept run. Okay. So I am waiting for your answers. So will error will occur or no? Error will have its place or we will have no error. Right? Error occurred. So what is the right answer? B. Sir, why error occurred? We got the answer. We got the answer for A divided by B. But we cannot divide any number with 0. That's why we got error. So that's all, guys, for today. Thank you for being with us. Thank you so much, guys.